So, Namaskar all of you. So, we will start today. ଆମେ 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲୁ PSA ର। So next ଆମେ 121 start କରିବା। ତ ସେଇଟା ଏଷ୍ଟୋପେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆଜି କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ବେସିକ୍ସ ଗୁଡା କହିଦେବି ଏଷ୍ଟୋପେଲ ର, କାହିଁକି ନା ବିଫୋର ଗୋଇଂ ଟୁ योर BSA तार पर्टिकुलर प्रोविजन्स को जानिबा आगुरु हमको एटा जानिया पे पड़िबो कि जनरली एस्टोपेल माने कोन। ओके आउ तार किछटा फीचर्स हमें देखिबा, किछटा टाइप्स हमें देखिबा, आउ तार डिसएडवांटेजेस एक्जेक्टली तो नुह किंतु आपण कहि परिबे तार लिमिटेशंस कोन, एस्टोपेल रो लिमिटेशंस कोन। ठीक अछि, से गुडा हमें देखिबा। राइट, एनीवन हु नोज व्हाट इज एस्टोपेल generally I'm not talking about कि हाँ आपण जानी चंती। ओके सेता मु कहूनी, बट एस्टोपेल जनरली ता मानेटा कोन। ओके जहाँ भी आपण पढ़ी चंती without giving a very technical definition, general गोटे definition आपण कोन बुझी चंती एस्टोपेल माने कोन सेटा मते कहंतु। एनीवन? सर नमस्ते। हाँ नमस्कार। सर एस्टॉपल मीन्स रेस्ट्रिक्शंस जोटा कि माने लागू हेले जोटा एक्सेप्शन टाइप जो करी हबनी आगो को सेटा ना सर? हाँ ठीक अच्छी, जनरल कॉन्सेप्ट आपनकर ठीक अच्छी। सेटा किछिटा रेस्ट्रिक्शन किंबा आपण किछिटा बैरियर्स इंपोज करचंदी। जणे गोटे प्रथम गोटे पोजीशन किछि गोटे नैची से आगु को जाई कि से पोजीशन टा जेमती बदली नै पारे। ठीक अछि, तो सेटा ठीक अछि। तार पुनी गोटे रिक्वायरमेंट हला कोन, सी जो पोजीशन नैची सेही पोजीशन को देखि तार जो अपोजिट पार्टी जो अछि कि अदर पार्टी जो माने अछंती से माने ताको निजर पोजीशन नै छ। ओके तो सेमानको पोजीशन आ पोजीशन ऊपर बेस्ड अछि। एबे ये जदी त पोजीशन को चेंज करिवो से माने भी नेगेटिवली अफेक्टेड हेबे। ओके तो एटा गोटे हमें लीगल टर्म रे गोटे कहलो। आउ कि आउ जदी के कोन ऐड करिया पे चाहेबे व्हाट यू मीन बाय एस्टॉपल, द डेफिनेशन डाकी भी, बट जनरल कांसेप्ट आपण कोन बुझचंती। आजी क्लास रे मु सेक्शंस को जाउनी, केवल कांसेप्ट बुझेबी काई कि ना आमर बहुत थर ओजेएस रे। ओके कौन कौन पढ़ुची हमर ना एस्टॉपल, टाइप्स ऑफ एस्टॉपल, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके सेमती भी क्वेश्चंस पड़े। राइट, सेक्शंस को न जाई कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस प्रिंसिपल हिसाब रे एस्टॉपल टा कोन। ठीक अछि, सेटा रो भी कांसेप्ट आपन को जानिबार अछि। ओके सो how can anyone else want to add something? Acha, so let me start with the etymology. Hela etymology माने कोन ना एही शब्दटा आछि को। ओके एस्टोपेल एटा आछि को from where it has been derived सेटा हमें प्रथमे देखिबा। ओके what do you mean by एस्टोपेल, from where it has been derived? नंबर 1 सेटा हमें तारा एटिमोलॉजी देखिबा। एटिमोलॉजी कोन माने एटा कोठू आ सोर्स टा कोन। ठीक अछि, तो फर्स्ट पॉइंट लिखंदु एटिमोलॉजी। हम गुडे पॉइंट्स लिखिबे तो फर्स्ट सेकंड लिखिया दरकार नहीं, से मन रखिया पड़े कोडा 1 2 एटिमोलॉजी खाली लिखंदु। एटिमोलॉजी अर्थ ए जो शब्दटा हला आपनकर एस्टोपेल एटा डिराइव कोठू होइची, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड। ओके सो जनरली देखिया गले एटा गोटे फ्रेंच वर्ड रू डिराइव हिच। ओरिजिनली हम गोटे फ्रेंच वर्ड रू ताको डिराइव करछु, व्हिच अगेन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम a Latin word. ठीक अछि, so take down estoppel originates from the old French word
Estoppel. Estoupal. Estoupal. Okay. Or ଆଉ ଗୋଟେ word ବି ଅଛି French ରେ estopper. Estouper. Estouper. Okay. ତା ମାନେ କଣ? Estoppel କିମ୍ବା estopper ର generally it meaning is to stop. Okay. Or to plug. କିଛି ଗୋଟେ let's say ଗୋଟେ crack ହେଇଯାଇଛି, hole ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି ଆମେ plugging କରୁଛୁ, plug ଗୋଟେ ଲଗାଉଛୁ. Okay. So which means to stop or to plug. Hello. To stop or to plug. So এইটা পুনি derive কোট হয়েছে? This has been derived from Latin. Okay. এই যে French wordটা এটা originally ওটা Latin word to derive হয়েছে. It has been derived from a Latin word, okay, which is stupere. Stupare. ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ନୋଟଟା ସୁବିଧା ହବ. ହେଲା. Stupere, which means to stop or plug. To stop or plug. Same meaning. Okay. To stop or plug. To stop or plug. Okay. ବୁଝିପାରିଲେ ତା ମାନେ କଣ? So to stop something. Okay. To plug something. To plug the gaps. ସେଇଟା ହେଲା ତା ମାନେ basically. ହେଲା. କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର legal context ରେ ଦେଖୁଛୁ law के point of view ରୁ ତାହେଲେ estoppel ମାନେ କଣ? Okay. What is the meaning of estoppel when we talk about law? The next point लिखंतु. In the legal context, in the legal context, in the legal context, in the legal context, estoppel signifies stopping or preventing someone, signifies stopping or preventing someone, stopping or preventing someone, or preventing someone from going back on their word or position. From going back on their word or position. On their word or position.
ओके कमा तो जोटा आम कही जड़े कि गोटे तार ओके सी गोटे तार गोटे किसी लीगल पोजिशन टे नहीं ता पोजिशन को देखिकी तार ऑपोजिट पार्टी एंड अदर पार्टी से माने तार तांकर पोजिशन नहीं एबे ये जदि तार लीगल पोजिशन टा चेंज करूछ गोटे स्टेटमेंट देथिला गोटे किछि एक्सेप्ट करिथिला किंतु एबे सेटा से एक्सेप्ट करूनी कि पोजिशन चेंज करूछ ताले सेमानंकु भी चेंज करिया पड़ियो दे विल आल्सो बी डिसएडवांटेज्ड ओके तांकु भी असुविधा हो जेतु ये पोजीशन चेंज कला आ पोजीशन ऊपर जेते जन डिपेंड करथिले समस्त को निज निजर पोजीशन चेंज करिया पड़ियो राइट तो तांकु लॉस हबो ओके तांकु प्रॉब्लम हबो तेनु लॉ सेटा अलाउ करिवन ओके सो कॉमा देखि पर्टिकुलरली when it would harm someone particularly to underline करो so this is a very important condition for estoppel particularly when it would harm someone when it would harm someone who relied on the initial statement or action who relied on the initial statement or action who relied on the initial statement or action तो जो पार्टीज माने ओके से हिसाब रे निज पोजीशन already fix करि सारचंदी डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन टेकन बाय ए पर्सन और सी तापर ताको पोजीशन चेंज करले जेतु समस्त को प्रॉब्लम होबो तो जनरली ताको ताको पोजीशन चेंज करिया पे दिया होबन तेनु पर्टिकुलरली जो अंडरलाइन करले और तापर जो पार्टटा लिखिले ओके पर्टिकुलरली व्हेन इट वुड हार्म समवन who relied on the initial statement or position सेटा हला बहुत इंपोर्टेंट जोटा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स रे देखिबा ओके तो एटा गोटे हमें वर्किंग डेफिनेशन देलु वर्किंग डेफिनेशन बुझचंती जनरल डेफिनेशन ओके जनरल डेफिनेशन राइट सो ताको टिके आउ स्ट्रक्चर्ड मैनर रे टिके बेटर केमती लिखवा दे एग्जाम रे पडुची व्हाट इज एस्टोपेल ओके ताले हमें केमती सिंपल लैंग्वेज रे आउ प्रॉपर डेफिनेशन गोटे देई परिबा ओके सो टेक डाउन डेफिनेशन एस्टोपेल रो डेफिनेशन तो एटा जहा लिखिले एटा आपन को बुझीबा पई तो परीक्षा रे एतले गोटे कोन पडुची सेतले हमको एग्जाम रो जहा रिक्वायरमेंट एग्जाम रो जहा एक्सपेक्टेशन से हिसाब रे हम ताको लिखिया पे पड़ ओके सो प्लीज टेक डाउन डेफिनेशन एस्टोपेल रो डेफिनेशन टा ओके व्हाट वी वुड राइट definition of estoppel okay so take down estoppel is defined as a doctrine estoppel is defined as a doctrine that prevents estoppel is defined as a doctrine that prevents a person from asserting something that prevents a person from asserting something
from asserting something contrary to what is implied, contrary to what is implied by, contrary to what is implied by a previous action, behavior, or statement. Okay, action, behavior और statement को underline करो. A previous action, behavior or statement. Okay, तो जो जिनसों हमें डिस्कस करते लोग कि कौन पाए इटा important concept of a doctrine of estoppel कहेंगे ना, it will ensure fairness. ओके, गोटे लोक सब लीगल पोजिशन जदि चेंज करिवो ता उपरे जो माने ओके तार लीगल आंसर ता दबा पे चेष्टा करछन्ती से माने तो ताकर जहा कहबा कथा ता पोजिशन को नै कि प्रिपेयर करथिबे सी एबे पोजिशन शिफ्ट करूची. ओके, चेंजिंग ऑफ द गोल पोस्ट्स तेनु सेटा प्रॉब्लम होबो ऑब्वियसली, सो सेटा को अलाउ करियबो. सो कंटिन्यू द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल तोडा तार ऑब्जेक्टिव ता हम डिस्कस करू ता एम टा कोन. तेनु डेफिनेशन परे सब गोटे गोटे लाइन लिखि देबे कि तार ओके what is the importance, why you are studying that particular concept. So estoppel ro importance ta kon seta likhiba. So take down the principle of estoppel. The principle of estoppel stops a party stops a party stops a party from taking stops a party from taking a legal position, taking a legal position that contradicts that contradicts their previous stance stance माने कौन पोजीशन हैला. पोजीशन भी अपन लिख परिबे, जते सिंपल इंग्लिश लिखिबे सेते अधिका मार्क मिलिबो. मिस्टेक्स कम होबो, स्पेलिंग मिस्टेक भी, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी. ओके, so contradicts their previous stance if such a change would harm the other party, if such a change would harm the other party, if such a change would harm the other party who relied on the original position, who relied on the original position.
ओके ताले कोन जण जदि सब बेले तार पोजीशन लीगल पोजीशन चेंज करथिबो से मिसलीड करूची अदर पार्टीज को तो अदर पार्टीज को सब बेले से माने प्रोग्राम रे रहिबे से माने गोटे प्रॉपर डिफेंस से माने प्रिपेयर कर परिबेनी कि गोटे काउंटर से माने प्रिपेयर कर परिबेनी काना ये तो सब बेले निजर पोजीशन चेंज करूची ओके सो द मेन एम हैला कि गोटे प्रॉपर और लेवल प्लेइंग फील्ड सब पार्टीज को दिया जिवो ओके इक्वालिटी जमते सब पार्टीज को रहइबो ओके सो टेक डाउन it ensures fairness by preventing parties from misleading others. It ensures fairness. It ensures fairness by preventing parties from misleading others. ओके तेणु कौन सी पार्टी जमती अदर पार्टीज को मिसलीड करि परिबे ओके गोटे पोजीशन नहीं कि पुनी पोजीशन चेंज करते जेमति कि से माने हैरान हेबे दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय लॉ हैला तर सो एक्सेप्शंस अछि पढिबा तार एक्चुअली फंडामेंटल्स ऑफ एस्टोपेल रो हमरो दीटा खंडे क्लास लागियो सो दैट आपण पूरा कांसेप्ट प्रॉपर्ली बुझि जिवे तापर हमें प्रोविजंस को जिबा 121 रु बीएसए रो बुझिबले ए पर्यंत काउ कोन डाउट अछि पचर Are you able to understand this much? What is estoppel? Okay. What is estoppel? What is the concept of estoppel? Definition of estoppel? एतिकी आपण बुझि पउछंती ए पर्यंत कोन कोन हमें देखिबा बेसिकली so we'll take two classes आजिरो क्लास रहइबो ताले काली तो कुमार पूर्णिमा काली छुट्टी अछि काली वेडनेसडे एसएचबी छुट्टी थर्सडे okay so two basic classes then we will go to the section 121 of BSA okay so हमको मेनली देखिबार अछि हमें डेफिनेशन देखिलु कांसेप्ट देखिलु एबे हमें देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत गुडे कैरेक्टरिस्टिक्स अछि एस्टोपेल तो आज हमें से कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करबा नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा टाइप्स एस्टोपेल रो टाइप्स बहुत गुडे टाइप्स रो एस्टोपेल अछि केते गुडे से गुडा हमरो इंडियन लॉ रे ओके परमिसिबल नुह केते गुडे एक्सप्लिसिटली या केते गुडे इम्प्लिसिटली परमिसिबल ठीक अछि सेटा देखिबा एटा नेक्स्ट क्लास रे आज काली हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखे बहुत गुडे कैरेक्टरिस्टिक्स गोटे गोटे देखला लोक हमरो टाइम अप हेजिबो ओके तापरे एक्सेप्शंस टू एस्टोपेल ओके तापरे हमें किछटा इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखिबा ओके आ तापरे जते बेला हमें तार सेक्शन सारिबा तापरे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपोर्टेंट मेंस क्वेश्चंस को देखिबा राइट सो टुडे वी विल जस्ट सी द कैरेक्टरिस्टिक्स तो ता आगु को जिबारु आगुरु गोइंग टू बिफोर गोइंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एनी डाउट्स इन द कांसेप्ट ए पर्यंत आपण जा बुझिले ओके यू फॉरगेट अबाउट लॉ जनरल कांसेप्ट बुझिले तो एस्टोपेल माने कोन कोठु डिराइव हेची ओके सो any doubts you can ask else we will go to the characteristics of estoppel lot many characteristics are there we will see the characteristics and kichida mein okay kaina jetole हमको गोटे 10 मार्क की 15 मार्क रो क्वेश्चन पडुची काना एटा एस्टोपेल टा दीटा जगह रे पडिबारो चांसेस अछि गोटे प्राय तो एटा इंडियन एविडेंस एक्ट किंबा बीएसए रे पडियो माने प्रोसीजरल लॉ पेपर रे पडियो ठीक है तो प्रोसीजरल लॉ पेपर रे हमरो प्राय 25 मार्क क्वेश्चन आसेनी ओके मेंस कथा कहूची 10 मार्क की 15 मार्क की 5 मार्क जदी हला ओके आउ जूरिस्प्रूडेंस प्राय केबे आसीनी सेमती बट इट इज अ जनरल कांसेप्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस
केबे जदि आसी गला सेठी 25 मार्क में भी आसपारे व्हाट इज एस्टॉपेल, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एस्टॉपेल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एस्टॉपेल, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टॉपेल, ओके व्हाट आर द लीगल मैक्सिम्स दैट आर एसोसिएटेड विद एस्टॉपेल, ए सब जिंसोडा ए दीटा फाउंडेशन क्लासेस रे हम ताको देखियो. ओके सो नेक्स्ट टेक द हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके एस्टॉपेल रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन. तो एटा आपण तार कैरेक्टरिस्टिक्स टा देखिबे आउ तार जो एक्सप्लेनेशन टा बुझिबे देन यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. निजे नोट्स लिखिबाटा डेवलप करिबा आपण सिखिबे. ओके सो दैट इज क्वाइट इंपोर्टेंट. ओके सो फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कैरेक्टरिस्टिक एस्टॉपेल रो जोटा हमें देखिलु बिसेटी. ओके आपण को डेफिनेशन रे ऑब्जेक्टिव रे कोन काई के एस्टॉपेल टा कोन पे दरकार काई कि ना जने जदि तार पोजीशन सबले चेंज करिवो देयर विल बी लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसीज. ओके सो नंबर 1 प्रिवेंशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी. ओके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्टॉपेल that it prevents inconsistency. Prevention of inconsistency. गोटे लोक किसी गोटे पोजीशन नहीं सारी किसी गोटे स्टेटमेंट नहीं सारी. ओके इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिटली तापरे से ताको पोजीशन टा चेंज करिबा जनरली अलाउड न. ओके फॉर एग्जांपल मोर गोटे प्रॉपर्टी अछि बड़ प्रॉपर्टी ता देहरु मु देखुची गोटे पार्ट साइड रे मोर जे नेबर अछि सी सेठी तार कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करले. ता माने कोन एट द अर्लीएस्ट पॉसिबल टाइम जेतेबेले मते जाना पड़ला कि ये तो मो जगह रे कंस्ट्रक्शन टा कलानी मते इमीडिएट सेठी इंटरवीन करिवार थिला. पुलिस कंप्लेन देतांती ताकू कहितांती जल मु देखिली नहीं से कोन देखिया कोन करछि करू हैला से तापरे मोर किछि जगह नै कि से तरह बरोबर कर देला. मु किछि कोन मु किछि समय परे 5-6 वर्ष परे जे पहुंचे ए तुमे केमती कलो तापरे प्रॉब्लम टा मु स्टार्ट करी. बट ओके जोड़ा हमें आगु देखिबा मु तो साइलेंट थिली. मु जानि छी कि से भूल कामटा करछि मे बी सीए जानि नथियो कि एटा मो जगह बोल कि मु जानि छी. ओके तो मते ताको स्टॉप करिवार थिला. तो फर्स्ट जेतेबेले आपण जानुचंती कि आपण का राइट कोठी वायलेट होची फर्स्ट इंस्टेंस रे आपण को ओके तार रेमेडी नबार थिला. सो देखिबा हमें बहुत प्रकार रो एस्टॉपेल अच्छी ए जो पर्टिकुलर एग्जांपल टा देली एटा माइंड रे रखि तांतु एटा को टाइप रो एस्टॉपेल रे आसीबो सेटा हमें देखिबा. ओके नेक्स्ट क्लास रे. तो पॉइंट 1 लिखिले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रिवेंशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी. ओके तापरे नेक्स्ट लिखंतु प्रोटेक्ट्स रिलायंस. ओके प्रोटेक्ट्स रिलायंस माने कोन जो अलगा पार्टीज माने रिलाय करथिले. ओके फर्स्ट पार्टी जा कहिछि सो दैट रिलायंस दैट ट्रस्ट हैज टू बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ. नाले ये पार्टी जदि सब बळे ता कथा चेंज करथिबो से माने डिफेंस के से माने तांकर काउंटर टा केमति करि. ओके सो प्रोटेक्ट्स रिलायंस जो अदर पार्टीज माने रिलाय करथिले ओके आर पोजीशन ऊपर ओके protects reliance एटा हला सेकंड पॉइंट. ठीक अछि. सो द अदर पार्टीज आपण बुझंतु तापरे निजे लिखिबे. ओके तार जो 1 की 2 लाइन रो एक्सप्लेनेशन लेखा हबो सेटा मु डाकिबिनी आपण कांसेप्ट बुझिबे निजे लिखिबे. अदर पार्टीज हु हैव रिलायड ओके सो ऑन द स्टेटमेंट हो कि तार कंडक्ट हो ओके
तार स्टैंड हो of one party, that reliance, that trust needs to be safeguarded. Okay, so it is point number 2. It protects reliance. Third characteristic कौन estoppel में दबा, that is it is based on representation. देखिए types of estoppel रे, estoppel by representation की representative estoppel that we will study in the next class. Okay, कितने प्रकार estoppel अच्छी अपन जानते हैं. There are around, including jette amaro jette jurisprudence schools अच्छी पाखा पाखी 14 रु 16 टा टाइप रो estoppel अच्छी जोटा हमें पढ़िबा next class. Okay, so point number 3, based on representation. Okay, based on representation. estoppel टा कोठु originate करूची, अरे जनकर गोटे पार्टी किछि गोटे कहूची, किछि गोटे लेखिची, गोटे पर्टिकुलर वे रे से ता निजको कंडक्ट करूची, ता बिहेवियर. ओके, तो सेउथुरु ही आपनकर estoppel टा अराइज करे. So it is always based on representation. Okay, so number 3, estoppel based on representation. Okay, so suppose मु मोर स्टेटमेंट देली कि मो पाखे इनिशियली 100 टंका थिला, तापर परे मु देखुची एमटा मते प्रॉब्लम हैला एटा कहि कि, तो मु तापर कहूची ना ना मु भूल रे कहि दिली 100 टंका नथला 10 टंका थिला. ठीक अछि, तो मोर जो रिप्रेजेंटेशन कि मो पाखे 100 टंका थिला को नै कि सपोज गोटे केस रे अदर पार्टीज सी तांको पोजीशन बिल्ड कर सरले, सी तांको काउंटर बिल्ड कर सरले, तापर मु कहूची सॉरी मोर 100 टंका नथला 10 टंका थिला, तो दैट जनरली इट विल नॉट बी अलाउड. एक्सेप्शंस अच्छी जो गुड़ा में देखिबा को केस रे. ओके, estoppel टा आपण एक्सेप्शंस टू estoppel that we will see. So it is based on representation. मु जेहेतु रिप्रेजेंट कली कि मो पाखरे 100 टंका अछि गोटे स्टेटमेंट देली, ओके, तारी ऊपर estoppel टा काम करियो. So it is based on representation. That is the third characteristic of estoppel. बुझि परले. तापरे point number 4 लिखंदो, applies to facts. Okay, so एटा बहुत important कहीं ना हमरो केबे केबे डिफरेंस पड़ी जाए. ओके, estoppel और लॉ भीतर. सो पॉइंट नंबर 4 रे लिखंदो, it applies to facts and not to law. ठीक है दोस्तों, परोटा को सारिया पे. ओके, so it always applies to facts. क्या मो रिप्रेजेंटेशन एटी जंती मु कोइ नो पाए 100 टका थिला ता ऊपर काम करियो. ओके, so जो रिप्रेजेंटेशन रे मु फैक्ट्स ता कहूची, any statement, any conduct, any representation of facts, okay, estoppel will work on that. But if there is any statement related to or representation of law, not of fact, of law, then it will not act. So estoppel acts on or applies to facts, okay, not to law. ठीक अछि, एटा माइंड रे रखिया अछि. ता माने कोन मु गोटे लॉ रो प्रोविजन कहूची. ठीक अछि, मु गोटे लॉ रो प्रोविजन कहूची. ओके, so estoppel is not going to work on that. It will work on facts. से 10 टंका 100 टंका कि 1000 टंका मो पाखे रे अछि, मु सेटा गोटे स्टेटमेंट देली, ता ऊपर काम करियो केना सेटा मु गोटे फैक्ट को रिप्रेजेंट करू. जदि मु केतले गोटे लॉ को रिप्रेजेंट करूची, estoppel will not work on that. Okay, suppose मु कहूची सबु क्षेत्र रे there has to be equality. Okay, so suppose public employment रे कहूची there has to be equality. Okay, so सेठी ताकू आ जने के कहि परिबनी कि नहीं एटा आ ता परे मु आ गोटे कोन किछि गोटे कहूची, अगेन लॉ. लेट्स से मु
आर्टिकल 16 कथा कहली तापर पुनी कॉन्स्टिट्यूशन रो ओके आउ 16(4) कथाटा भी कहूँ राइट सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ ओके सेठी एस्टोपेल काम करबनी इट ओनली एक्ट्स ऑन फैक्ट्स एतिकी मन रखिबे सो एस्टोपेल अप्लाइज टू फैक्ट्स नॉट टू लॉ ओके तापर तार मेन इंटेंशन कोन जोडा में देखथिलु एतला में लिखिथिलु तार डेफिनेशन टा इट प्रिवेंट्स अनफेयर एडवांटेज सो नेक्स्ट टेक डाउन नंबर 5 रे prevents unfair advantage prevents unfair advantage okay so it prevents unfair advantage तापरे देखंतु एटी कोन होची this basically prevents any unfair advantage it stops someone from changing his legal position tamane kon this is basically a defensive doctrine eta gote cause of action nuho eta gote offense ki nije action initiate kariba okay sei type ro doctrine nuho so it is a defensive doctrine okay so take down next it is a defensive doctrine so doctrine of estoppel is used as a defense okay generally used as a defense not as a cause of action not as a cause of action okay so generally estoppel will be used as a defense so it is a defensive doctrine okay तापरे next point अच्छा एति की पॉइंट्स आगे फर्स्ट आपण थरे आउथरे ताको देखंतु टेक 2 minutes for these things okay and tell me if you have any doubts ए छटा पॉइंट्स रे जदी किछि डाउट अछि कोटा बुझी परलेनी you want me to repeat then tell me okay so now come to point number 7 okay so point number 7 lekhantu requires detriment means it should be detrimental to the other parties na other party should be disadvantaged ताको पोजीशन नेगेटिवली अफेक्टेड होबा दरकार डेट्रीमेंट माने कोन डेट्रीमेंटल हम कहूछु ओके मींस ओटे नेगेटिव कनोटेशन ओके अन्य माने अलगा पोजीशन नहीं सरचंदी ये बे जदी शिफ्ट करचंदी निजो पोजीशन समस्त डिसएडवांटेज रे रहिबे so it would be detrimental to the interests of other parties okay तेनु एस्टोपेल पाई एटा गोटे नेसेसरी इंग्रेडिएंट that other parties okay should be in a detrimental position ताहले जे suppose मु गोटे मोर पोजीशन देली okay मोर स्टेटमेंट देली other parties are not affected by it से माने तांकर डिफेंस हो कि तांकर जहा भी से माने तांकर लीगल प्रेजेंटेशन करिसेंती ओके डिफेंस करिका करचंती कि तांकर जहा भी से माने जेंती लड़ीबे that is not dependent on my statement आउ आगु को जाई कि मु मो स्टेटमेंट ता पुनी चेंज करली तो से माने डिसएडवांटेज हो ना दे ओके जेहेतु डेट्रिमेंटल होनी तांकू तो ए जगह रे एस्टोपेल जनरली तो
ताको detrimental न हेले भी it is a good policy that it the courts will not allow कि एटा निज पोजीशन टा चेंज करा कथा नो किंतु जति से माने अफेक्टेड हो नांदी मो पोजीशन जदी चेंज करूची मे बी इट विल बी अलाउड काइना सेटा अन्य मानको अलगा पार्टीज को अफेक्ट करू ओके मु गोटे एग्जांपल दोछु से 100 टका कथाटा कहली तो मु फर्स्ट कहि दिली 100 टकाटा मोर गोटे जीन पैंट रे थिला ठीक अछि एपे जदी मु कहूची से 100 टकाटा एक्चुअली मोर गोटे कॉटन पैंट रे थिला जीन पैंट रे नथला ठीक अछि सेतले किछि प्रॉब्लम नै कथाटा हैला 100 टकाटा थिला दैट इज द मैटर ओके केते टका थिला मो पाखरे मो पाखा 100 रुपीस मो आगु कहिची एबे खाली कहूची नै मोर मु गोटे आउ गोटे पैंट रे मोर 100 रुपीस थिला ओके जीन्स रे थिला कि कॉटन से थिला कि खाकी से थिला जे भी तो एटा जदी मो पोजीशन चेंज करली मो अदर पार्टीज जो माने रहले तांकू किछि नेगेटिवली अफेक्टेड होनी it is not okay detrimental to their interest तेणु एई जो मोर पोजीशन टा मु चेंज करिया पे चाहू कि करूची एठी प्राय कोर्ट मते मना न करि पालो बट बेस्ट जिंस होला कि मो पोजीशन चेंज ही न करी सपोज तो चेंज करिया पे पड़ जदी डेट्रीमेंट नहीं अदर पार्टीज को ताले मे बी कोर्ट विल अलाउ ओके सो फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल टू वर्क there has to be presence of detriment okay change in position should be detrimental to the interest of other parties se manako kichi oda loss hochi buchi parle eta hela point number 7 now come to point number 8 that is it operates on promises ठीक अछि so एस्टॉपेल बाय प्रॉमिस की प्रॉमिसरी एस्टॉपेल जोटा हमें देखिबा आगु को नेक्स्ट क्लास रे सो नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु ऑपरेट्स ऑन प्रॉमिस नंबर 8 ऑपरेट्स ऑन promises okay operates on promises ठीक अछि so suppose मु गोटे किछटे प्रॉमिस कर suppose गोटे हाउस ओनर अछि आ मोर जने बडा अछन मो घर तो मु तां कहली ठीक अछि आपण मु 2 वर्ष पर्यंत आपण भडा पढाइबे तो सी खुशी है कि कोन कहले ना किछटा तांको आडू से निजे खर्च करके किछटा ब्यूटिफिकेशन किंबा रिपेयर्स करके निजे आडू कर दो ओके कोन पई केना मु तां कहिछि तांको प्रॉमिस करछि कि भडा बढ़िबोनी 2 वर्ष किछि समय परे 3 मास 3 मास 6 मास 8 मास परे मु कहछि नाही मार्केट कंडीशन चेंज हो गलानी मु भडा बढ़े हैला तेनु एठी एस्टॉपेल विल वर्क ऑन मी प्रॉमिसरी एस्टॉपेल मो ऊपर काम करिवो काहे कि ना मु तां प्रॉमिस करछि एटा ओके आ मो प्रॉमिस को रिलाय करिकि से जहां भी मो घरे से किछि एक्स्ट्रा जिंस करछन जोटा कि नॉर्मली गोटे जो भड़ा रे रोचनी टेनेंट सेटा तांको करिया कथा नोसा मत करिया कथा किंतु मु जेतु कहिछि मु भड़ा पढेबिनी से सही प्रॉमिस को नै कि खुशी कर दिछन राइट सो इट ऑपरेट्स ऑन प्रॉमिसेस जोटा कि हमें प्रॉमिसरी एस्टॉपेल बोली कहछु ओके तापरे नेक्स्ट नंबर 9 कैन अराइज from silence can arise from silence गोटे पार्टी किछि कहूनी चुप की अछि ओके पूरा चुप की अछि से जानुची ता राइट टा ओके किंबा ता प्रॉपर्टी की जा भी हो he knows that his right is being violated someone is constructing on his property की जा भी हो तार जा भी ओके कि ओटे कोन नै जाउची ओके से जानी छी केमसे किछ कोन चुप की अछि तो एट दैट टाइम he has a duty to speak जेतबेले कहबार थिला आपण चुप की रहले ओके सो ए साइलेंस रु भी ओके estoppel can arise from this
silence also. Okay, that is called estoppel by silence. Okay, or on the podiva types estoppel by silence or acquiescence. Okay, acquiescence, estoppel by acquiescence ki khali acquiescence bi ame taku कहउछु. So that we will study. कि जेतबेले आपनको कहिबार थिला आपण किछि कहिलेनी परे आसिकी आपण कहउचंदी ओके आपण जानि चंदी भूलटा होउछ जदि जानि नांती दैट इज अ डिफरेंट मैटर किंतु जदि जानि चंदी ओके आरो लोकटा जानिनी ओके सो सेटा हमें पूरा डिटेल्स रे तार कंडीशंस पूरा देखिबा जेतबेले हमें एस्टॉपेल बाय साइलेंस रे देखिए सो इट कैन अराइज फ्रॉम साइलेंस सो wherever you have a duty to speak you should speak. Okay, so it can arise from silence. नॉले कौन ना सी सबु तार सी जहाँ भी आपण लेट्स से मुझे एग्जांपल तो फर्स्ट नहीं दिली आपण बड़ा प्रॉपर्टी अछि तार गोटे साइड रे आपण नेबर आपण को प्रॉपर्टी ऊपर से घर रे कर दीची बाउंड्री कर दीची जहाँ भी आपण जानि चंदी मे बी सी जानि सी बाबू जे एटा लेट्स से सेठी बाउंड्री हेनी सी बाबू जे एटा मो जगह माने ता जगह बोली बट आपण जानि चंदी ना सेटा भूल करची सेटा आपण को जगह किंतु आपण चुप अछंदी आपण 5-6 वर्ष परे जाई की कहउचंदी ओके तो एठी एस्टॉपेल बाय साइलेंस अराइज हे परियो कि जेतबेले आपण जानि थिले ओके आ आपण कहिबार थिला इट वाज योर ड्यूटी टू स्पीक यू हैड रिमेन्ड साइलेंट कुछ बात तापरे नेक्स्ट पॉइंट लिखंदो इट मस्ट बी क्लियर एंड अनइक्विवोकल तो रिप्रेजेंटेशन टा जहा ऊपर आपणकर एस्टॉपेल टा ठिया हिची सेटा क्लियर हेतिबा दरकार और किछि एम्बिग्युइटी नथिबा दरकार मस्ट बी क्लियर एंड अनइक्विवोकल must be clear and unequivocal तमाने कोन नो एम्बिग्युइटी ओके जो रिप्रेजेंटेशन किंबा जो स्टैंड्स किंबा जो पोजीशन जने नेची सेटा पूरा क्लियर हेतिबा दरकार ओके जल्दी मु कहली मो पैंट मो पॉकेट रे 100 टका अछि सेटा क्लियर मो स्टैंड्स टा क्लियर मु जदी एमती कहबी मो पॉकेट रे एमती पाखा पाखी 100 टका कि 200 टका थिला ओके तो सेटा आउ एम्बिग्युइटी आस 100 टका थिला 130 टका थिला कि 200 टका थिला मु तो एग्जैक्टली कहि पाउनी सो इट मस्ट बी क्लियर एंड अनइक्विवोकल ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु इक्विटेबल प्रिंसिपल जोटा हमें आगु देखिबा इक्विटेबल ओके एस्टॉपेल जोटा भी सो इक्विटेबल प्रिंसिपल सो तार कोन फोकस टा हला फेयरनेस और जस्टिस ऊपर ओके सो इट इज एन इक्विटेबल प्रिंसिपल इक्विटेबल प्रिंसिपल तामाने कोन समाज चारटा पार्टी अछंती समस्त को डॉक्ट्रिन टा इक्वली अप्लाई करूछु ओके सो it is basically it follows the equitable principle ठीक अछि तापरे next point so it basically focuses on fairness and justice okay next हला जोरा already हम ଗୋଟେ point डिस्कस कर सकथिलु कोन एटा जनरली डिफेंसिव okay cause of action no so next point take down not a cause of action एटा ଗୋଟେ jurisprudence ଗୋଟେ famous कोटेशन किंबा डिक्टम अछि तो ता ऊपर भी पढ़ी पारे दैट एस्टॉपल इज ए शील्ड नॉट ए सोर्ड डिस्कस मीन्स रो क्वेश्चन ता अर्थ हला कि आपण डिफेंस में शील्ड टा कोन पय आपण यूज करते शील्ड रे कोन का मुंडोटा कटे देबे कि आपण अटैक करिवे का ऊपर ना आपण को एटला अटैक होची आपण शील्ड टा देखुछे ओके सो एस्टॉपल इज ए शील्ड नॉट ए सोर्ड that is it is not a cause of action the next point likhantu not a cause of action okay so it is a shield
not a sword. तो सपोज 10 मार्क रो क्वेश्चन पढ़ला मेंस पाई तो एटा सारी की मु 10टा क्वेश्चन जोड़ा मु देइथिली सेटा टिके खाली क्वेश्चन सुडा आपन कहि देबी काना सबुडा तो पढेनी तो सेकंड क्लास परे you will give me the answer of those questions. Okay, so एटा गोटे मेंस रो क्वेश्चन है पारे that estoppel is a shield not a sword. Discuss की elucidate. Okay, ताले से केस रे आपन को लिखिबार अछि कोन it is basically a defensive doctrine. It is not a cause of action in itself. हैला से पार्ट ता आपन को फोकस करिवार अछि. So 12टा पॉइंट्स हैला. So from point number 1 okay to point number 12 just go through your notes and let me know जदि कोटा आपण बुझी पारलेनी ओके मु आरो डिटेल्स गुडा दउनी से गुडा आपण लिखिबे काहे ना मु बुझौची ताले सेतरे कोन ना आपण को एनालिटिकल पावर भी बढ़िबो ठीक अछि सो एनी डाउट्स यू आर हैविंग फ्रॉम point number 1 मु आउ थरे थरे पॉइंट्स गुडा कहि दउची प्रिवेंशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी protects reliance based on representation, applies to facts, prevents unfair advantage. Okay, a defensive doctrine requires detriment. Okay, operates on promises, can arise from silence, must be clear and unequivocal, equitable principle, not a cause of action. Okay, that means estoppel is a shield, not a sword. एतिकी भितरे 12टा पॉइंट भितरे you think about it, just go through it. If you have any doubts, को पॉइंट भी आपण बुझी पारलेनी ताले मते पचारि पारिबे. ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो माने अछंती लेटर ऑन आल्सो जदि एबे आपण को आपण अलगा नॉन लाइव क्लास टाइम रे क्लास ता देखु चंती और आपण के जे डाउट्स अछि यू कैन व्हाट्सएप मी ओके ये पर्टिकुलर पॉइंट ता कोन तो मु वॉइस नोट रे आपण को कहि देबे. ओके मोस्ट ऑफ यू नो माय नंबर इन नुआ अछंती जान नांती. So you can WhatsApp me at 9437 00 2210. Okay, इधर WhatsApp कर दे परिवे. Any doubts? ए बार करे. Else we'll go to next. So next. एगुडा एक्चुअली हमें टाइप्स ऑफ एस्टॉपेल एबे डिस्कस करूछु. Okay, माने किछि पॉइंट्स रा टाइप्स ऑफ एस्टॉपेल अगेन विथ इलस्ट्रेशन मु नेक्स्ट क्लास रे कहबी. नेक्स्ट पॉइंट हैला एस्टॉपेल बाय रिकॉर्ड. ओके सो जेंति को जजमेंट हैला कि एनीथिंग व्हिच इज रिटन कि जोटा रिकॉर्ड रे अछि. ओके सो दैट इज जेंति कि रेस जुडिकाटा करिका हम देखिबा को. ओके सो एस्टॉपेल कैन बी बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड कि और जजमेंट सो दैट सेटा आउ थरे सेटा रीलिटिगेशन तार होबो. Okay, so next point, take down estoppel by record. Get the number written 13. Okay, so इतने judgments करिका से गुडा सब जीवो तो जदि सेमति किछि रेकॉर्ड रे गोटे जिंस अछि ओके तो जजमेंट रे गोटे जिंस अछि तो सेटा फुनी आउथरे आपण ताको रीलिटिगेशन ओके करिबाटा जनरली अलाउड होबनी जोटा हमें आगु को जाएंगे तारो पर्टिकुलर केसेस रे रेस जुडिकाटा एंड ऑल दैट यू विल स्टडी जो माने आगु पढिचंती सीपीसी करिकरे सेटा पढिथिबे अदरवाइज न्यू स्टूडेंट्स यू विल स्टडी दैट. ओके सो एस्टॉपेल बाय रिकॉर्ड. नेक्स्ट पॉइंट हैला एस्टॉपेल बाय डीड. ओके एस्टॉपेल बाय डीड. so एटा टेक्निकली कहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट और types. Okay, estoppel by deed. कौन एटा estoppel by deed? What you mean by estoppel by deed? So estoppel by deed माने जने जदि किछि गोटे ओके ऑलरेडी कहिचन सेटा एबे से मना कर परिबेनी जदि स्पेशली से गोटे लीगल डॉक्यूमेंट रे गोटे स्टेटमेंट रे ओके गोटे एफिडेविट रे सेटा को रिप्रेजेंट करिछन. Okay, so if you have submitted anything in a formal legal document, सेटा को आपण डिनाय कर परिबेन. So estoppel by deed. Okay,
So whatever you have stated in a formal legal document, that you cannot say later कि नहीं एटा mu करिनी कि करनी. Okay, you cannot deny the truth. Okay, related to that. Forgery fraud से अलगा कथा सेटा exception से देखियो. मो नारे कि ओटे sign कर दीजिए. Okay, that is a different matter. Right. So सेटा हला estoppel by deed. Next, already जोटा मु कहली estoppel by record तारो गोटे particular आपण कहि परिबे example हला res judicata. Okay, so next 15 एटा गोटे example आपण कहि परिबे आरो. तो गोटे some matter which has been adjudicated by the competent court. Okay, out same parties को भीतर अछि same title रे ताले सेटा आउ थरे relitigation तारो हबन once it has been finally decided by the competent court. Okay, like res judicata रो principle टा हमें जानिछु. Right, so that is res judicata. Next point हला estoppel by conduct, by your behavior. Okay, तो सेतरे कोन आपण का actions भी हे पारे और inactions भी हे पारे. Okay, inactions भी हे पारे, so it includes both actions and omissions, right, or actions and inactions. Excuse me, sir. हाँ कुहନ୍ତୁ. सर टिके सर जो आपण रेस्ट जुडिकेटेड कथा कहले से टिके आउथरे कहिथिबे आ सर एस्टोफेल बाय डीड भी टिके आउथरे कहि दैथिबे. Okay, estoppel by deed माने any formal legal document रे आपण जहा statement देइछन. Okay, सेटा आगु को जाइकी आपण डिनाय करि परिबे. Right, so it may be, let's say, an affidavit or any formal legal document. Whatever position you have stated there, you cannot go back on that. So सेटा हला estoppel by deed. Res judicata एटा 13 रो example which is estoppel by record. What is estoppel by record रे हम कोन लिखलो? Anything which is written, or let's say for example a judgment etc. Okay, जदी सेमती already किछि गोटे judgment हे की अछि. Okay, res judicata तार गोटे specific example कि जोटी same litigating party same title उपरे से माने okay किछि already गोटे competent court सेटा adjudicate करि सरचंती. Okay, तो एमाने again ता ऊपर relitigation करि परिबे नै. So this is basically you can associate it with 13. Okay, now estoppel by conduct माने, so suppose आपण निजर behavior, conduct माने कोन basically, okay, your behavior, your actions, or even your inactions. Okay, omissions गोटे जिंस करिया कथा मते मु केतु करूनी जो कलिनी जो inaction टा कली जो omission टा कली. Okay, so estoppel say to be arise करिपर. So estoppel by conduct basically arises from actions or inactions. Okay, jabi. So that is estoppel by conduct. और say जो action किंबा inaction that creates reliance or that induces reliance, so that other parties will rely on that action or inaction. Okay, so from there your estoppel arises. Okay, from your action, maybe from your inaction also. Okay, so both your action and your inaction, if they induce reliance of the other parties से माने आपण को action की inaction ऊपर भरोसा करके से माने तांकर ओके काउंटर प्रेजेंट करूचंती और किबा तांकर डिफेंस प्रिपेयर करले तांकर लीगल प्रोसीडिंग्स प्रिपेयर करले. ओके, ताले सेठी सेही केसेस रे estoppel arises, okay, from your conduct, that is your action or your inaction. सेटा हला estoppel by conduct. Okay, so main aim कौन यदि हमें estoppel रो कहबा, what is the main aim? Already हम देखलु fairness, okay, justice. Okay, so गोटे पार्टी जेंति आ गोटे पार्टी किंबा आ अलगा पार्टीज को एक्सप्लॉइट ना करू. ठीक अछि, so it works on justice. Next point, works on
justice, works on justice. Okay, so that is the main aim. Okay, to have equity, fairness, justice for all the parties. तापरे गोटे एक्सेप्शन विषय भी कहीदेवा जमती मु कहली कि मु जमती आपण कहले एस्टॉपेल बाय डीड रे ओके मोटे एफिडेविट रे मोर सिग्नेचर अछि सो मु मना कर परिबिनी कि जहा लेखा हिची सेठी मु सेटा स्टेट करिनी बट सिग्नेचर मोर नु मो भले देखा जाउची कि आउ जने के कर दैचंती ताले कोन हबो ना फ्रॉड रे आसिला तो भी एस्टॉपेल वर्क करनी नो सेटा गोटे एक्सेप्शन फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा. So next point है not applicable to fraud. Not applicable to fraud. है So in case of fraud, without exception आपनकर estoppel. Okay. तापरे next point. एटा भी गोटे essential ingredient of a estoppel. कौन? Requires knowledge. तामाने कौन जी रिप्रेजेंटेशन करिचंती तांकर इधर नॉलेज थिला किंबा जनरल केसेस रे नॉलेज थिबा कथा. ओके मो प्रॉपर्टी रे आउ जण के घर करूची जनरली मो प्रॉपर्टी टा केते मु जानि छी ता देर जदी के वायलेट करके पसी की ट्रेसपास करके से तरह ओडे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कलानी तो मते जानिबा भी कथा. ओके तो दीटा पॉइंट अछि एतरे नॉलेज थिबो किंबा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रे नॉलेज थिबा कथा. ओके तो जे रिप्रेजेंटेशन करूचंती तांकू फैक्टा जणा थिबा दरकार. ओके इधर से जानी थिबे किंबा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रे तांकू जानी थिबा दरकार. If he does not know, that is his mistake. Okay, normally he should have known but से जानी ना राइट. सही केस टा हो किंबा से जानी चंती जहां भी हो नॉलेज जे भी रिप्रेजेंट करूचंती एस्टॉपेल विल बी बिल्ट ऑन दैट फैक्ट कि जदी तांकर नॉलेज थिला किंबा नॉलेज थिबा कथा. ओके गोटे फैक्ट ऊपर राइट. सो इट रिक्वायर्स नॉलेज. ओके सपोज आई एम स्टेइंग आउटसाइड यूएस रे अछि किंतु मो जगह एठी अछि गोटे केयरटेकर अछि एठी से देखुची मो जगह. तो इन दिस केस आई शुड हैव द नॉलेज कि क्या के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कलानी. ओके बट सपोज वो जेल रे अछि बहुत दिन हला आई हैव नो एक्सेस टू एनीवन के लोक भी मते विजिट करे पे आसना सही जगह रे मोर से नॉलेज ता हबा पॉसिबल नो सिंस नो वन इज कमिंग टू मीट मी और मु भी काउ गोटे पठेई परिबिनी जेल भितरु जाई के देखो मो जमीर कोन हला तो एठी मोर से नॉलेज ता हबा पॉसिबल ना है. बुझि परले. सो इट रिक्वायर्स नॉलेज. वन हु इज मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन he must have the knowledge of the facts. Okay, either he जानी थिबा दरकार. Okay, or normal cases रे okay he should have known either से जानी चंती और से जानी थिबा दरकार. He knows or he should have known. हैला. So requirement of knowledge, right. तापरे लास्ट पॉइंट जोडा कि फर्स्ट हमें देखथिलु कोन एस्टॉपेल केते बेले आपनकर बिल्ट हबो जेते बेले आपण अलगा पार्टीज कर ओके डेट्रीमेंट थिबो. से डेट्रीमेंट थिबो बोली केमिति जानिबे. इट हैज टू बी प्रूव्ड. ओके दैट देयर इज डेट्रीमेंट कि जदी एठी आको स्टॉप ना करा गला पोजीशन चेंज करिवरु अन्य पार्टीज को असुविधा हबो. ओके तांकर इंटरेस्ट हैम्पर हबो. इट विल ओके बी डेट्रीमेंटल टू देयर इंटरेस्ट. दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड. सेटा प्रूव होला परे ही the estoppel will start operating.
Okay, so this is a very important part, that detriment needs to be proved. Okay, so take down last, detriment must be proven. Detriment must be proven. Okay, ये invoke करिवो estoppel को, जे कहूँ कि मते लॉस होची, ये जदि पोजीशन चेंज करिवो, he has to prove that he is disadvantaged. Okay, ता interest को detrimental रहिबो, that he relied on the position of the person who made the representation, and since he has relied on it, now it will be against him. Jodi apan taku allow kar. Okay, so that must be proven. Only then the doctrine of estoppel comes into play. It has to be proved. Okay, bujhipale. So these are the characteristics of estoppel. Okay. Tapare, so any doubts here? First one, the doubts suda. Tapare kali ame, mane next class re, not tomorrow, Thursday. Next class re, ame kon dekhiba. Now we will go for the various other aspects, jemti ki legal maxims kon. देखो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत पड़ी तो एटा जदि गोटे 10 की 15 मार्क क्वेश्चन पड़ुची ओके ताहले मते वैल्यू एडिशन करिया पे पड़िबो सो ए जो एस्टॉपेल रे ओके व्हाट आर द लीगल मैक्सिम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड बहुत गुडे मैक्सिम होते सब तो मन रख परिया ने दीटा इंपोर्टेंट टॉपिक्स रे दीटा मैक्सिम्स आपण माइंड रखिबार सो दैट वी विल स्टडी देन वी विल गो टू टाइप्स ऑफ एस्टॉपेल एज आई टोल्ड यू 14 to 16 types of estoppel are there. Sabura examples or illustrations देखिबा. तापरे exceptions देखिबा. यदि fraud आपण देखिले. Fraud is an exception to estoppel. सेमिति आउरी बहुत अछि. से exceptions थोड़ा देखिबा. Okay. Now let us come to some of the questions. ठीक अछि त सब गुडा हमें पढिनो. मु भी आंसर किछि ओके कहिबिनी. सेटा next class re once we finish tapare ame okay then we will go for this. Sir, जो point 19 और point 20 अछि requires knowledge and detriment must be proven सीधे टिक्के आउतरे कोई दिथि. अच्छा first requires knowledge person तो requires knowledge माने देखंतु जे statement टा को represent कला कि तारा position टा को represent कला ते केमिति represent करूछ. मु जो first example टा देली मो pocket रे 100 rupees अछि. मु कहूँ मो पॉकेट रे 100 रुपीस अच्छी राइट मु केमती जानली मु ही रखी दिबी मो पाके नॉलेज अच्छी मो पॉकेट रे केटा अच्छी ऑब्वियसली मु ही जानबी ओके सो ईदर आई नो और आई शुड बी नोइंग ओके सपोज मु गोटे एमती टाइप रो लोक कि मो पॉकेट भी चेक करेनी जे जा वाइफ जा पैसा रख देला मु से धर के आसे बट आई शुड नो मो पॉकेट रे केटा अच्छी सो दीटा कंडीशन हमें देखिले पॉइंट नंबर 19 दैट पर्सन requires okay knowledge either he has the knowledge or he should have the knowledge से जानी चंती से विषय रे किंबा ताको जानी थिबा दरकार ठीक अछि yes sir सेटा हला पॉइंट नंबर 19 अब मो जमी रे आउ की आसी घर कलानी सेटा मते जहा बिल मु जोठी भी रहता है ओके अनलेस मु जेल वेल रे मते कोन रखचंती जोठी की मु कन्फाइंड की अछि ओके एज पर लॉ लीगली मते रखाई छी ओके तो मते जानिबा दरकार सेटा राइट किमा लेट से मते की किडनैप करके नै गेला 5 वर्ष 10 वर्ष रख दी छी किडनैप करी तो से केस रे मु जान परिबी बट अदरवाइज मते तो जानिबा दरकार ना मो प्रॉपर्टी रे आउ की जगह अल्प नै की से घर कर देलानी इधर आई नो इट और आई शुड हैव नो तो 19 ए दीटा जाको कंडीशन संगे रे डील करू छु 20 हला डेट्रीमेंट मस्ट बी प्रूवन जोटा हमें फर्स्ट रे देखि दिलु ओके वन ऑफ द important ingredients okay of estoppel kono na detriment okay iba darkar that is it requires point number 7 it requires detriment means other parties should be at a disadvantage
but who will, prove that? So that other party je invoke karuchi estoppel को सी सेटा देखिबो ये लोक जो स्टेटमेंट देइथिले जो रिप्रेजेंटेशन देइथिले फर्स्ट जो स्टैंस नैथिले फर्स्ट जो पोजीशन नैथिले तांको पोजीशन हिसाब रे मु मोर ओके जा लीगल रिप्रेजेंटेशन करबा कथा कि जा मते काम करिया कथा मु तांको पोजीशन हिसाब रे कामडा करिछि एबे जेतले से पोजीशन ता चेंज करूछंती मते डिसएडवांटेज होछि ओके सो ही हैज टू प्रूव that any change in the position, okay, will be detrimental to his interest. He will be at a disadvantage. सेटा ताको प्रूव करिया पड़िबो कोर्ट को. So detriment खाली कहि देले हबनी, detriment must be proven in the court. बुझि पाले? Question number 20. Yes sir, yes sir. Sorry, question number कहली, point number 20. Yes sir. So now let us come to the questions. Some questions may be upon not kari paranti, but anyway all questions we will discuss, okay, after we complete class 2. Second class ta saridala pore tapare apana e questions uda okay handle kari pare. 10 ti question achi, so I will just tell you the questions. So second class pore eta apna app re aro detailed solution ta palebo. Question 1 dekhantu, which of the following is not a recognized form of estoppel under Indian law? Okay, promissory estoppel, proprietary estoppel, estoppel by record, estoppel by acquiescence. Okay, jota ame silence kailu. ठीक अछि, खाली questions रा हम कहि दउ तो अपना माइंड रे रखंतु. Next class में types of estoppel को जिबा ए questions रा आपन माइंड रे थिबा दरकार. In the context of estoppel by representation, which of the following conditions must be satisfied for estoppel to apply? The representation must be made with fraudulent intent. The party seeking estoppel must have relied on the representation to their detriment. The representation must be related to a future intention or promise. The party seeking estoppel must have independent knowledge of the true facts. Next, question 3. Which of the following best distinguishes promissory estoppel from equitable estoppel? Okay, promissory estoppel requires a formal contract while equitable estoppel does not. Promissory estoppel applies to promises about the future, while equitable estoppel applies to representations about present facts. Equitable estoppel is limited to case of proprietary interest, while promissory estoppel is not. Promissory estoppel always involves a legal obligation, while equitable estoppel never does. Okay, so question 3. Question 4. Which of the following situation would not give rise to proprietary estoppel? A assures B that B can build a house on A's land and B relies on his assurance. A allows B to occupy a portion of land for farming without a formal lease and B makes substantial investments in the land. A verbally agrees to sell his land to B, but the agreement is not formalized and B takes possession. D. A makes a casual statement about giving B a property in the future, but B does nothing in reliance on it. Okay, that is question 4. Now come to question 5. Which of the following is not a condition for invoking res judicata as a form of estoppel? The matter must have been heard and decided by a competent court. The decision must have been made on the merits of the case. The parties in both cases must be the same or previous to the same. The judgment must have been based on a procedural technicality. That is question 5. Not a condition for invoking res judicata as a form of estoppel. Question 6. Under the doctrine of estoppel by deed, which of the following is true? A party is estopped from denying any fact
stated in any legal document they have signed. Estoppel by deed applies only when a contract is breached. A party is estopped for denying the truth of a statement made in formal deed, even if the statement was made mistakenly. Estoppel by deed can be invoked only in criminal proceedings. Next, question 7. In collateral estoppel, which of the following elements is not required? The issue in question must have been litigated in a prior action. The party against whom the estoppel is invoked must have been a party or privy in the previous case. The previous decision must have been a default judgment. The issue must have been essential to the judgment in the previous case. Okay. Next, question 8. Which of the following is true regarding judicial estoppel? It prevents a party from taking inconsistent position in separate legal proceedings. Judicial estoppel requires a finding of fraud to be applied. Judicial estoppel applies only in criminal cases. It prevents the court from reversing its own judgment. Question number 9. Which of the following is not true of equitable estoppel? It can be invoked by a party to enforce a legal right that they knew existed all along. Equitable estoppel focuses on preventing unfairness or injustice. It can arise from silence when there was a duty to speak. It requires reliance by the party invoking estoppel. And last question. In which scenario can estoppel by record be invoked? A party tries to deny a fact established by previous court judgments involving the same parties. A party makes a representation that they are owner of certain property in a deed. A party makes promise that is not backed by consideration but includes reliance. A party asserts inconsistent legal positions in separate cases involving different facts. Okay, so এটা just খালি thare thare দেখন্তু. Once we complete this part in the next class, তারপরে এই questions গুলো আমি discuss করিব. Fine. So then we will stop here. Next Thursday, okay, we will go for the rest part of it, the fundamentals of estoppel. Okay, তারপরে আমি BSA 121 ରୁ start করিব. Okay, provisions গুলো section wise তারপরে দেখিবা estoppel related কোন কোন provisions ଆମର ଅଛି. Right? So we'll stop here then. Any doubts, anything you want to ask, then you can ask. Fine then, we'll stop. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Namaskar.